Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Okay, let's start with our lecture. Okay, first of all, I want to discuss with you regarding the practical part. Okay, जो आपने practical file बनानी है, listen, all of you. जो आपने practical file बनानी है, वो practical file आपने soft copy बनानी है, which contain the program and then the output. Okay, one program and then output on the one page, on the single page. Second program and then output on the second page. Okay, in this way you have to make the file. First machine exercise, list of the programs and the program with output, program with output. This is your first exercise. Second exercise in the same manner. Okay, make the both exercises and submit it by Monday on my email ID. Clear to everyone regarding the lab part? आप सबने फाइल Yes, ma'am. मेरे को सबमिट करनी है. Yes. Ma'am, both the machine exercise we have to do on a single soft copy or different? Single में एक ही फाइल, एक ही सॉफ्ट कॉपी बनाओगे. Make the space PDF of that soft copy and then send it to my mail ID. Okay, ma'am. Clear? Ma'am, you, excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, you are not visible, ma'am. I'm not visible. अब ठीक है, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Board should also be visible. Is it board is visible? Yes. Now it is okay. Clear? Now, am I visible and audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, lab part is clear to everyone? Yes or no? And submit it by Monday. Excuse me, ma'am. Make the single PDF of both exercises. Excuse me, ma'am. Yes. मैम जो मशीन एक्सरसाइज सेकंड है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी आउटपुट शो करनी है. सबकी आउटपुट देनी है. वो मैम जो एक्सप्रेशन है सिर्फ उसकी आउटपुट ही शो करनी है कि वो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा वो बताना है प्रोग्राम में. नहीं, हमारा जो लैब पार्ट में आएगा, मेक द प्रोग्राम एंड शो द आउटपुट. फर्स्ट यू हैव टू मेक द प्रोग्राम and then write the like this is your program. Okay, write the lines of programs and then on the same page write the output like this and write the output here. Like नो this is मैम, the one आई program. मेंट कि उसमें एक्सप्रेशन गिवन है कि उसकी आउटपुट बस डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखना है और उसकी आउटपुट करवा लेनी है. Yes, जो आपको रन करने पे प्रोग्राम की आउटपुट आएगी वो आपने डिस्प्ले करवानी है. ओके मैम, थैंक यू. आपको सॉल्यूशन में नहीं जाना. Okay, anybody else regarding the lab part? Any problem? Shall I move to next part now? Yes, shall I move to next part? Okay, students. Now let's discuss regarding the क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट सेशनल हमारा हुआ उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज रेफरेंस स्ट्रक्चर. आई थिंक वो तो सबको पता ही है कि रेफरेंस स्ट्रक्चर क्या है. क्या होता है? व्हाट इज रेफरेंस स्ट्रक्चर? Anyone? क्या होता है? क्या होता है रेफरेंस स्ट्रक्चर? रिप्लाई मी. आपने एग्जाम में लिखा है, शीट्स में मुझे आंसर मिले हैं. हेलो मैम. यस. मैम, रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है कि हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जिसमें वन और मोर पॉइंटर होती है मैम.
और वो सेम टाइप स्ट्रक्चर को मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है मैम. Yes, structure which refer to itself using the concept of pointers, that is called the self-referential structure. Self-referential structure. When the any structure which point to itself using the concept of pointers, that is called the self-referential structure. That is the one question. Second question is implicit and explicit type conversion. Yes, ये मैंने आपको वीडियो सेंड की थी implicit और explicit type conversion की. क्या आंसर होता है इसका? Implicit and explicit type conversion. मैम इम्प्लिसिट में स्मॉल टाइप डेटा को लार्ज डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं इन द क्लास बेस में मैम. स्मॉल डेटा टाइप जो होती है मैम उसको हम कन्वर्ट करते हैं लार्ज डेटा टाइप में इम्प्लिसिट में मैम. Implicit में? यस मैम. अच्छा. मैम इम्प्लिसिट में कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंगली डाटा कन्वर्जन कर देता है और एक्सप्लिसिट में फोर्सेबल डाटा कन्वर्जन होती है. Yes. Implicit में all the conversions are performed by the compiler itself. Compiler automatically convert from one type to the another type using the concept of implicit type conversion. But in the case of explicit, we forcefully convert the one type of data into the another type of data. ये कहाँ पे यूज करते हैं? Implicit कहाँ पे होता है? Where we use the concept of implicit? Implicit का कहाँ पे यूज होता है? Yes. Where we use implicit कहाँ पे यूज हुआ है? Anyone? मैम कैन यू प्लीज रिपीट? Where we use the implicit, here you have used the implicit type conversion. Can I write like this? Basically, first is what is type conversion? Type conversion is basically converting of the data from one type to another. Type conversion is basically to convert the data from one type to the another is called the type conversion. Okay, that is one thing. Implicit means which is performed by the compiler itself. Explicit means which is performed by the programmer itself. Okay, by the programmer. Now, tell me what is this? Int a equal to 10, float b is equal to a. Is it visible? This is the integer type, this is a float type. ये चलेगा प्रोग्राम? Yes? Anyone? चलेगा ये? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. यहाँ पे क्या हो रहा है? The size of this float. One float contain the 4 bytes, and if I take the turbo C plus, it contain the integer contain the 2 bytes. So 2 bytes का डाटा 4 bytes में आ सकता है, पर जो 4 bytes का डाटा है वो 2 bytes में नहीं आ सकता. ओके, ये जो कन्वर्जन हो रही है इसको कहते हैं हम implicit conversion. This conversion is called the implicit conversion. And whenever we forcefully want to convert data from like this is called the explicit. This is called the explicit. When we forcefully try to convert the data from the like this, from 2 to 1. Like मैंने अपने वीडियो में एग्जांपल भी बताई थी कि अगर सुनी वो वीडियो वहां पे आप ये चीज को देखना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. What is the function of Hello, the ma'am. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. Hello, ma'am. Yes, Ma'am, screen is not visible. screen is not visible. Blackboard is Yes. visible to all of you, I think so. Yes. मैम देखो, मैंने दोबारा यस मैम नहीं दिख रहा मैम. मैंने दोबारा लीव करके फिर से ज्वाइन किया है बट फिर भी नहीं शो हो रहा है. Yes, Saurav, screen is visible or not?
No, ma'am. No, ma'am, it's not. No, ma'am. Visible नहीं है. wait. Hmm? Ma'am, Yes. Let me share it again. Now is it visible? no, ma'am. Yes, ma'am. I think it is visible. No, ma'am. No, ma'am. Shelly, No, ma'am. Yes, on ma'am. my end the board is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Board is visible. ओके ये टॉपिक आपने वीडियो में से चेक करना है कि एक्चुअली क्या होता है मैंने वहां पे प्रोग्राम दिया हुआ है ये वाला ठीक है चलो जल्दी से आगे चलें हमने अगला टॉपिक भी करना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज differentiate between the single L and the double L yes what is the difference एक मैम एक Character है, एक string है. डेटा टाइप एक स्ट्रिंग है मैम. okay this is a character type and this is a string data type और इसमें कितने बाइट्स मेमोरी होगी कैर में occupy one byte and how many byte of memory it occupy in the case of string character 1 bytes is always for the null character 2 by 2. एक मेमोरी किसके लिए होती है नल कैरेक्टर के लिए ठीक है दिस इज आल्सो वन डिफरेंस now fourth question write a program to dynamically initialize the variable of type int to value 10 using the single statement क्या किया है बच्चों ने ऐसे लिखा हुआ है int a equal to 10 कईयों ने तो ये किया हुआ है कईयों ने ये किया हुआ है पॉइंटर बनाया फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पॉइंटर इज इक्वल टू 10 ये सारे गलत है यहाँ पे डायनामिकली इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रही है वेयर इज डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन यस एक न्यू इंट लेते हैं how we allocate dynamically by using new operator. by using the new operator we have to just write pointer ptr is equal to new int same type and the brackets the round brackets and take the value variable int data type pointer allocation dynamically and same int type data type and this is the value which we want to store this is the single line dynamic allocation okay is it clear is it clear to all of you Yes, ma'am. yes now next question write a program to input data of n students write a program to input the data of n students and display the details of students using the highest percentage marks using structures yes कैसे most of students ने तो attempt ही नहीं किया ये student question क्या करना है इसमें बेटा क्या कहा है कि write a program to input the data of n students you have to input the data of n students तो अब हम पहले क्या करते हैं स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बोला हुआ उन्होंने तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम है स्टूडेंट ओके अब स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है पहले तो हमें स्टूडेंट में चाहिए उसका रोल नंबर ठीक है दूसरा मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम ठीक है अब मुझे क्या करना स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी इंट मार्क्स ठीक है उसका भी एरे बना लेती हूँ अब मुझे और क्या चाहिए टोटल परसेंटेज भी बोला है करने के लिए तो मैंने एक टोटल परसेंटेज का भी बना लिया ओके टोटल परसेंटेज का भी मैंने एक टोटल परसेंटेज तो सिंगल होगा तो उसको मैंने ऐसे बनाया ये मेरा बन गया स्ट्रक्चर कि एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया उसमें मुझे रोल नंबर चाहिए नेम चाहिए और मार्क्स चाहिए नेम क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे तो मुझे एरे लेना पड़ा मार्क्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स के होंगे इसलिए मैंने एरे लिया
टोटल परसेंटेज तो सिंगल बच्चे की एक ही होगी, तो इसलिए मैंने सिंगल छोड़ दिया इसे। ओके, ये पहले तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। वन थिंग इज दिस, अब इस स्ट्रक्चर का मैं बना लेती हूँ ऑब्जेक्ट। वो चाहे आप यहाँ पे बना लो, चाहे वो कहाँ पे बना लेना, void main, and here I will write, you can write here also, or you can write like this, student S1. Okay, this is the one thing. Now यहाँ तक हो गया। अब क्या कहा है उन्होंने कि you have to input the data of Ma'am, students. Yes, ma'am, that part isn't visible, ma'am. Where you write void main function. Right, right, right. Now it is visible. Now it is visible. Yes. Yes, ma'am. Okay. Object is created or the variable S1 is created. Now, listen carefully. Question is to input the data of n students. We want to input the data of n students. हमने students कितने enter करना डाटा? S1 से तो एक का record enter होगा. ये S1 जो बनाया है, this S1 created the columns like this. One for roll number. Listen carefully. Second for the char, that is for the name. Third is for the marks with array, and this is for the total percentage. जब मैंने ये S1 लिखा है, S1 लिखने से मुझे ये मेमोरी एलोकेट हो गई, कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के ब्लॉक्स होंगे जिसका नाम होगा रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड टोटल। Now this is the S1 represent for the one record. Now I want to make the input the data of n records. Data n record का करना तो मैं क्या बना दूंगी इसको, array। तो मैं बना दूंगी array, let me take it as 20, like 20 students का input करना, और subtract 100 का करना, आप 100 ले लो, और आप dynamically करना चाहते हो dynamically कर सकते हो। Okay, now next comes thing. Now ये तो हो गया डाटा मैंने, अब मेरे पास क्या हो गया, S1 नाम का S1 0, S2 0, S3 0, oh sorry, I'm S1 0, S1 like this, इस तरह का बन जाएगा। S1 की 0 लोकेशन, S1 की 1 इंडेक्स, S1 का 2 इंडेक्स एंड अप टू द 19th इंडेक्स, अप टू द S1 19th इंडेक्स, ये मेमोरी बन जाएगी। अब इनमें क्या है कि मैं 0 से मतलब कि 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट कर सकती हूँ। क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? अब मुझे इनपुट करना है तो कैसे इनपुट करूंगी, इनपुट कैसे करते हैं? अब n स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट करना तो क्या करूं मैं, सी आउट, enter the number of students, enter the number of students, c in n, now n लिखा मैंने तो n को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, int n। ओके, नाउ अब क्या है, n इनपुट कर दिया, अब मैं लगाऊंगी क्या, अब मैं कैसे करूंगी इनपुट, कैसे करूंगी रिकॉर्ड n स्टूडेंट्स का, बताओ भी। फॉर लूप से। फॉर लूप लगाऊंगी, यहाँ पे लगाऊंगी क्या, फॉर लूप लगाई, फॉर लूप इंट आई 0 से लेके आई लेस देन 20 का करना है, n की जो n की ले लेते हैं वैल्यू, n लेस देन इक्वल टू लेस देन n आई प्लस प्लस। ओके, अब इसके अंदर क्या लिखूं बेटा, बताओ, टेल मी, क्या लिखूं इसके अंदर, व्हाट शुड आई राइट? यस, फॉर लूप मैंने ओपन की, क्यों ओपन की, क्योंकि मैंने n स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट करना है। अब इनपुट क्या करना है ये बताओ। यस, अब इनपुट क्या, रोल नंबर, नेम, यस, रोल नंबर करना है, तो क्या लिखूं यहाँ पे, सी आउट, सी आउट लिखूंगी, सीन, सी इन। अब मैं क्या लिखूं, SI डॉट S1 S1 I, मैम SI नहीं आएगा, S जो हमने S1 ये ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 I
एरे ना, दिस इज एरे Yes, S1, ma'am. तो एरे लिखना पड़ेगा Dot roll number. डॉट रोल नंबर। तो क्या होगा, अब मैं किसमें इनपुट कर रही हूँ, जो मैंने S10 बनाया है उसमें जो रोल नंबर वाला ब्लॉक है, I want to insert data on that place. Clear to everyone? Yes or no? Yes. Now next tell me, what should I write? क्या लिखूं next? C. Yes, बोलो। Next क्या लिखूं मैं? Then afterwards again I will write C in for name X1 I means zero index. फर्स्ट जीरो ही चल रहा है ना मेरा लूप का, तो जीरो आ गया। Yes, उसमें ma'am. नेम हमने क्या बनाया था, वी हैव मेड द नेम एज एरे। अब यहाँ पे क्या लिखूंगी? यस टेल मी, अब यहाँ पे क्या लिखूंगी? यहाँ पे एरे का क्या लिखूंगी, नेम का? एनीवन? अब नेम का यहाँ पे क्या आएगा? क्या नेम को ऐसे छोड़ दूं, चलेगा प्रोग्राम? यस स्टूडेंट्स टेल मी, क्या नेम को ऐसे लिख दूं, चलेगा? एग्जीक्यूट होगा ये? ऐसे ये एग्जीक्यूट करेगा कि मैं कुछ लिखूं इसके साथ? ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? रिप्लाई मी विद यस और नो। yes ma'am यस ये क्या करेगा, नेम की स्ट्रक्चर की I0 लोकेशन के ऊपर नेम का जो कॉलम है वहां पे डाटा इनपुट कर देगा। सिमिलरली यू विल एंटर। अब क्या करूं इसके बाद? मैंने नेम भी एंटर कर दिया, रोल नंबर भी एंटर कर दिया, अब क्या करूं? ma'am one more for loop वन फॉर लूप। यस अब मार्क्स है तो मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। सब्जेक्ट्स कैन बी 1 3 4 5, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो लेट्स टेक एन फॉर लूप अगेन। फॉर लूप इज फॉर द मार्क्स ओनली एंड आई। नाउ अगेन क्या करूंगी, 0 से लेके कहां तक चलूं, 5 तक अगर लगाना मैंने एस प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखूं अब मैं? यस टेल मी, अब बताओ क्या करूंगी मैं, क्या लिखूं, बोलो। आपने किया है सॉल्व, आपको होना चाहिए ये चीज। सीन कराएंगे मार्क्स Scene कराएं. क्या लिखूं, बोलो इनपुट आप तो बोलोगे, मैं वही लिखूंगी। सीन Scene यस मार्क्स कॉलम, S1 ओके एक्स, बोलो शाबाश। यस स्पीक। S1 I डॉट dot marks मार्क्स तो फिर I. आई, राइट, इनपुट कर लिया। ओके अब क्या करूं, देन आफ्टरवर्ड्स I'm close the for loop. क्लोज कर दूं, ये तो मार्क्स इनपुट हो गए, तो इनपुट हो गए। अब क्या करूं, फिर क्या करूं? यस एनीवन एल्स? हम परसेंटेज फाइंड करेंगे परसेंटेज फाइंड करेंगे, अच्छा और लूप बस के बाहर और उसके बाद बस इतना ही। हम उधर सरफेस टोटल भी निकाल लो यहीं पे हाँ टोटल कहाँ करें, वही तो पूछ रही हूँ। for loop के अंदर ही हाँ क्या करूँ? एक int नाम sum बना दो ना एक. अच्छा इन सब नीचे इसके अंदर बना दो, नहीं बाहर बनाना है. कहाँ पे? यहाँ पे? Yes ma'am. यहाँ पे यस। ये देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस S1 I डॉट मार्क्स, ये लाइन समझ लग गई आपको क्या लिख रहा है? टोटल। नाउ if I write int total, first I have to initialize the value with total with 0. यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लूंगी टोटल को, then it will take garbage value and add with your marks.
you have to take the total as a 0 so that you can able to add any content. अगर यहाँ पे मैं total 0 नहीं लिखूंगी तो क्या होगा? It will take any garbage value and add it to my marks. और वो मेरे मार्क्स के साथ ऐड कर देगा उसको. ये नहीं हम चाहते. पहले चाहते हो मेरे पास 0 हो और उसको ऐड करो. ठीक है, उसमें क्या हमने टोटल को क्या कर दिया 0 और टोटल को अब 0 किया. अब ये टोटल को अगर 0 में यहाँ पे करती हूँ ना तो जितनी बार मैं रिपीट करूंगी तो वो क्या करेगा? टोटल 0 के साथ ही क्या करेगा? ऐड करेगा. सो वी हैव टू राइट दिस लाइन इन टोटल आउटसाइड द लूप. आउटसाइड द लूप. Clear to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. अगर मैं इसको इंट टोटल को अंदर लिखती हूँ तो वो टोटल हमेशा अपडेट हो जाएगा किसके साथ? 0 के साथ. तो फिर वो हमेशा जैसे मेरे 80 मार्क्स आए हैं. ओके, 80 मार्क्स आए हैं. When I will move to the another marks, 80 plus 0, 80. Again, अगर 0 ही होगा अपडेट होगा 0 plus 90, 0 plus 85, इस तरह मूव करते रहेंगे. ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल. ये नहीं हमें चाहिए. हमें तो टोटल चाहिए हर बार अपडेटेड. तो पहले क्या हो? टोटल 0 किया, वो भी आउटसाइड द लूप. अब यहाँ पे 0 आ गया प्लस जो आपने इनपुट किया होगा लाइक 80, दैट विल बी स्टोर इनटू द टोटल. ओके, अगेन इट विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. I1, यू विल इनपुट द मार्क्स. इट विल मार्क्स. टोटल कितना हो चुका है हमारा? 80. नाउ जो आपने अभी इनपुट किया लाइक 90, इट विल बी इनपुट and add the value and that will be stored total में store होगा. Then afterwards again true condition, you will input the value, it will add 80 plus 90. What will the answer? 70. 170 plus post आपने 100 लिख दिया, then it will add by 100 like this. ये आपका क्या हो जाएंगे? मार्क्स सेंटर आ गया. आपका यहाँ पे क्या आ गया? टोटल. Now, outside the loop, write just percentage. What is the formula of percentage? What is the formula of percentage? Yes, tell me. What is the formula of percentage? अरे आप बेटा मैंने नेक्स्ट टॉपिक करना है. Tell me the formula of percentage. क्या लिखूं यहाँ पे? मैम मार्क्स ऑब्टेन्ड जो भी है टोटल मार्क्स. Total COT डिवाइड बाय over 500 oh 500 multiply 100. multiply 100. This is your percentage. ये आपकी percentage आ गई. Then afterwards I think आप next solve कर सकते हो. Is it clear to all of you? Excuse me, ma'am. Yes. मैम बट ये लूप तो सिर्फ 5 टाइम्स ही चलेगी ना, बट हमें 1 स्टूडेंट के लिए ये 5 टाइम्स चलानी है ना, तो वो हमारी चल रही है ना, ये चल रही है लूप. उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी ना, तो ये लूप खत्म हो गई. तो मैम वो तो 5 टाइम्स आई, जब 5 हो जाएगा वो तो रुक जाएगी, बट हमें हर एक स्टूडेंट के लिए 5 टाइम्स चलानी है ना. बेटा ये देखो, ये लूप खत्म हो गई, ये 5 टाइम खत्म हो गई. उसने उसकी परसेंटेज निकाल दी. यस मैम. उसके बाद मेरी ये लूप फॉर लूप जो है कौन सी वाली, ये वाली फॉर लूप खत्म हो गई. यस मैम. खत्म हो गया. अब आई कितना अपडेट हो चुका है? आई इज अपडेटेड बाय 1 2 1. SI 1 रोल नंबर इनपुट करोगे, नेम इनपुट करोगे. अगेन फॉर दैट स्टूडेंट एंड फॉर दैट रोल नंबर एंड नेम स्टूडेंट के लिए आप इनपुट करोगे मार्क्स. ओके मैम. समझ लग गई? This for loop is a nested for loop which comes within this for loop. कि एक आई के लिए कितनी बार for loop चलेगी? 5 times. This for loop will move for 5 times for the one I. For the one student it will move for the 5 times. Then जब ये ब्रैकेट आ जाएगी, ये करली ब्रैकेट, फिर वो अगेन कहाँ पे जाएगा? अपडेट द वैल्यू विद I with 2 3 4 जो भी वैल्यूज आएंगी, then again it will continue. Clear to everyone? Yes, students. Shall I move to next question? कर लोगे complete next आगे अपने आप? Yes or no? Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Next question is, write a program to calculate the area of rectangle, square,
triangle using the function overloading. Now tell me. ये तो बहुत easy question है. I think so. Write a program to calculate the area of rectangle, area of square, and the area of triangle using the function overloading. Means I have to calculate the area of triangle, and the formula is L into B. Second, I want to calculate the area of square. Area of square, that the formula is side square. Now I want to calculate the area of triangle. Area of triangle. Triangle formula contain be L H into B, or it can be Hero's formula, wo jo S is equal to A plus B plus C divided by 2. You can implement any formula. Yeah. Yes or no? You can, depends upon the input. दोनों formulas आ सकते हैं? Yes. Yes. The formula for the ये formulas हैं. Now I have to make the program which will calculate the area of rectangle, which will calculate the area of sphere, which will calculate the area of rectangle using the concept of the function overloading. Now function overloading, the function having the same name but different parameters. Function having the same name and different parameters. क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? मैम तीनों फंक्शन का नाम void area हो जाएगा. Yes, function overloading means function having same name. Void area. Void area. Now next tell me क्या करूँ मैं? मैम int L और int B ले लो. Int L and int B. Yes. Now next. Now tell me what should I do? What should I do? Return Return. L into B. सी आउट Return. करना था. Return or void है. it's depend upon you. You can write like this: return L into B also, or you can write like this also: C out L into B. It's depend upon you. अगर तो ये आपको वैल्यू आपके प्रोग्राम में आगे जाके चाहिए तो then you should use a return keyword. If there is no requirement of this value in your program, then there is no need to write a return. Okay, it's depend upon the program. Now next, what should I write? What should I write? Void area. Void area. Again, same name. Yes. Yes. क्या लिखूं यहाँ पे? What should I write? int side. Int Int side. side. Yes. Then C C out. outside into side. C out. C out. Side into C out or return? side into side. Side into Side. side. Okay, you can use a return also. Now next, again, void Area. area. इस तरह आप प्रोग्राम बनाओगे. क्या मैं इसको पूरा लिखूं? मुझे लगता है कि आपको समय लग गया होगा. Shall I write explain this whole program? No, ma'am. Yes, students. अगर किसी को स्टूडेंट को है इशू तो मैं कर सकती हूँ. Shall I write this program? थर्ड वाले के पैरामीटर. थर्ड वाले के पैरामीटर. Okay, now listen. अगर तो मैं ये यूज कर रही हूँ, if I'm using this formula, this also contain the two parameters. This also contain the two parameters. Means one is H and second is B. If I write here int and int, now here it will be generate an error. Here it will generate an error because already you have declared and defined the function with two parameters, and the parameter type is also int and int. Okay, then you have to specify or change the type. You have to write like this float, or you can write int also, or you can write float also. But you have to change the data type in this case if you are taking the two parameters. If you are taking the three parameters, then it's okay. Then
then it's okay. Then you can write like this also. Int A, int B, int C. Now because it contains the 3 parameters, it contains the 2 parameters. So compiler can easily fetch the call the data, call the function. Clear? मैम Yes. मैम बोर्ड विजिबल नहीं है. बोर्ड विजिबल नहीं है. नो मैम. आई थिंक बोर्ड इज विजिबल. मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हिलाया ही नहीं. अपने आप कैसे चला गया? नेट में आवाज, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम. हाँ तो फिर rejoin the meeting. संजय. यस मैम. Clear to everyone? मैम ये लास्ट वाला पार्ट फिर से समझेगा. तीनों में इंट लिए पहले में फ्लोट लिए. Okay, listen. Suppose I am taking the area of rectangle. I am taking the formula 1/2 h into b. I am taking the formula h into b. Now I want a h and b value, and h and b are also 2 parameters. Now if I write like this, int h and int b. If I write int h and int b, okay, h and b. Now h and b are the 2 parameters, and Yes, ma'am. I had already made the function, same name function with 2 parameters above in the above program. Okay. Same. अब कंपाइलर जब अगर हम कॉल करेंगे तो मैं लिखूंगी एरिया 5 into 6. अब कंपाइलर बोलेगा मैं किसको कॉल करूं, मैं इसको कॉल करूं कि इसको कॉल करूं, तो वो क्या जनरेट कर देगा? एरर. इट विल जनरेट एन एरर. ओके, सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल. This thing is not possible. So if you want to take the 2 parameters, then change the data type. Then change the data type. Now, if I write 5 into 6, it will call the this part. And if I write area 5.6 and 6, then it will call this area. Clear? Yes or no? Yes, ma'am. एरिया नाम के सेम फंक्शंस हैं. अब फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेगा कंपाइलर? बाय द नंबर और विद द टाइप. अगर फ्लोट है, अब फ्लोट्स में चेंज कर दिया. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन. शैल आई राइट द फुल प्रोग्राम? Yes or no? I want a No, reply ma'am. from your side. No. Now next, good. I'm going to move to the next program. नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट. ये प्रोग्राम मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था और किसी ने मेरे से एक बार पूछने की कोशिश भी नहीं की कि मैम ये प्रोग्राम क्यों लिखवाया आपने, कैसे करना है. जहां तो आपको आता है पर अटेम्प्ट मुझे मिला नहीं किसी ने किया. राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया and the parameter of rectangle. I want to calculate the area of rectangle and the area of parameter. That is, the formula is L into B and L plus B. This is a formula. I want to calculate this. Okay, but by returning more than one value. Now means I have to calculate the area and parameter of rectangle. Return word आ गया, इसका मतलब है मुझे फंक्शन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. It means I have to use the concept of functions. The return word represent that I have to use the concept of function. Ma'am, you are not audible. Okay, if I using the return keyword, it means I have to use the concept of functions. Yes. Now, if I have to use the concept of functions, and according to the functions, अगर कोई भी फंक्शन बनाते हो तो वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता. इट विल नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू. आपने इसका प्रोग्राम बनाते हैं, कोई बताएगा कैसे करेंगे ये प्रोग्राम? पॉइंटर का यूज करके मैम. और पास बाय रेफरेंस यूज करके. पास बाय रेफरेंस. यस, पास बाय रेफरेंस यूज करेंगे. दैट इज द इजीएस्ट मेथड. पास बाय रेफरेंस. गुड. पास बाय रेफरेंस में क्या होता है?
क्वेश्चन समझ लग गया सबको? क्वेश्चन समझ लग गया है कि हमने एरिया रेक्टेंगल का और पैरामीटर का निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया बट वी डोंट वांट टू रिटर्न मोर देन वैल्यू. व्हाट रिटर्न? एक वैल्यू से ज्यादा रिटर्न कर ही नहीं सकते. जैसे मैं लिख देती हूँ void main. नाउ फर्स्ट आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया. इफ आई वांट टू कैलकुलेट एरिया, नाउ रिक्वायरमेंट इज L into B एंड एरिया के लिए A और पैरामीटर निकालना है तो PR. यस, बिकॉज एज यहाँ पे लिख देती हूँ. आई विल राइट formulas. AR equal to L into B and PR is equal to L plus B. Yes. Now, according to this formula, I need the L and B. I have written the L and B. And I need the AR. I have write the area. And next, PR equal to formula के accordingly L और B चाहिए, वो मैंने लिख दिया. Yes. Now, see out. Enter L and B. See out L and B. Now, C in L into B. C L and B. Now, then afterwards, now tell me, what should I do? Yes, tell me. मैंने इन L और B की वैल्यू ले ली, वो इनपुट कर ली, मेरे पास आ गई. Now, what should I do? What should I do? Yes, tell me. फंक्शन क्रिएट करेंगे. फंक्शन क्रिएट करेंगे. मैं ना ये ब्लॉक्स, ये विजिबल है आपको? यस मैम. यस, ठीक है. मैंने मेमोरी लोकेशंस बना ली हैं और उसमें L और B की वैल्यू 2 और 3 इनपुट कर दी. क्लियर? नाउ आई विल मेक द वन फंक्शन. फंक्शन के सबसे पहले स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शन? नेम. व्हाट इज द हाँ नेम ऑफ फंक्शन. फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शन डिक्लेयर करेंगे. Whenever I want to make the function, I will declare the function. Function declaration. Function declaration is like the void AR and PR. I'm just making them now. रिटर्न की बात हुई है तो एक से ज्यादा रिटर्न करनी है वैल्यू, जहाँ एक भी करनी तो मुझे तो void लिखा हुआ है ना? तो मैं क्या int लिखूं यहाँ पे कि void लिखूं? पहली बात तो ये, यहाँ पे void लिखूं कि int लिखूं? void लिख. void लिख लेते हैं. int लिख सकते हैं क्या? हम एक ही पास करेगा, फिर एक ही रिटर्न करेगा. चलो पहले Value. void से बाद में int में रेज करके करूंगी, ठीक है? अब इसके अंदर अब क्या लिखूं इसके अंदर? What should I write? int L, int B, int B, int ਤੇ reference operator ਤੇ AR. reference operator AR AR ਤੇ int reference operator ਤੇ PR. ओके. अब इसमें कुछ चेंज करना चाहेगा कोई? Anyone want to make change in this line? Is it okay? This is the declaration part. Is there is a need of L, B, AR and PR? No, ma'am. No. No. And why I have written this is a reference operator. Reference operator means एक जानना, एक ही लोकेशन को multiple persons are pointing. One location, this is the one location which is pointed by the A also, which is pointed by the B also. एक ही ब्लॉक को दो जाने कॉल कर रहे हैं, that is with the help of the reference operator. Okay, now call function call करें. int that is for the L comma B and here क्या लिखूं मैं? AR and PR. It is okay? यहाँ पे okay? ऐसे लिखूंगी कि ये ऑपरेटर आएगा? Yes, tell me. ये ऑपरेटर आएगा कि नहीं आएगा? What is the syntax of reference operator? What is the syntax of reference operator? ऐसे होता है?
कैसे होता है? कौन सा राइट है? यस टेल मी। फर्स्ट वाला। मैम फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे कॉलिंग टाइम पे जो बात कर रहे हैं, कॉलिंग टाइम पे किसकी बात कर रहे होते हैं? While calling, we are talking about this part. Okay, now here I will write C out AR and C out PR. AR and PR. C out AR and PR. Next, get CH and then now let's make the definition of the program. Void. I'm writing the void here, so I have to write here void. What is the name of function? ARPR. I will write ARPR. Now, here first is the int. Now, what should I write here? What should I write here? Yes, tell me what should I write here? L. L comma int B comma reference operator AR comma reference operator PR. Yes or no? Now, what should I write here? क्या लिखूं आप बताओ तो? AR equal to लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे AR1 लिख देती हूँ। ओके, AR1 लिख देती हूँ, यहाँ पे PR1 लिख देती हूँ। AR1 L into breadth and PR1 L 2 L plus B and ओके मैं बंद कर दिया मैंने यहाँ पे। नाउ टेल मी, अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना। हमारा क्वेश्चन था कि हमने एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, ठीक है? तो अब इस प्रोग्राम में तो मैं बिल्कुल भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट रिटर्निंग एनी सिंगल वैल्यू, but it is reflecting back to my program. How? L. What is the value of L? What is the value of L? What is the value of L is 3, 2. वो कहाँ पे चलेगी? यहाँ पे। Value of B कहाँ पे चलेगी? Into this B. This is another location. And this area. Now till now area contain garbage value. That garbage value. Now ये रेफरेंस ऑपरेटर क्या रेफर कर रहा है कि AR की जो लोकेशन है और जो A1 की AR1 की लोकेशन है वो क्या है? सेम AR and AR1 are pointing to the same location. Okay. Similarly, in the case of the PR and PR1 are pointing to the same location. Now L into B, 2 into 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, it is stored into AR1. What is AR1? AR1 लोकेशन कौन सी है? AR1 की लोकेशन क्या है? This is the AR1 location. Okay. PR1, 2, L plus P. That is the 2 plus 5, 5 into 10. 10. Now, if I write here AR and PR, what will be the answer? What will be the output? Yes, tell me, what will be the output? Students, 6, tell 10. me. 6 and 10. वैल्यू मैंने रिटर्न नहीं की, रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज किया, पर भी फिर भी मेरी वैल्यू डेफिनेशन से मेन पार्ट में आ रही है। In this way, we can able to return our value of the definition into the main part. मैम प्लीज समझा दो, फिर से समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं लगा? कुछ नहीं लगा इसका पता? मैम वो जो void ARPR लिखा है आपने, जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है वो वाला पार्ट है ना, इसको ये यहाँ तक समझ लग गया सबको, है ना? मैं क्या करती हूँ, फंक्शन का आई विल राइट द फंक्शन नेम ARPR अगेन। डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है मैंने? वन इज फॉर द L, मीन्स जो L की वैल्यू यहाँ से होगी कॉल के टाइम पे वो कहाँ पे चली जाएगी? मेरे इस सेल के अंदर। B की वैल्यू जो होगी वो कहाँ पे चली जाएगी? यहाँ पे, ठीक है? ये AR, दिस AR वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द दिस AR, बट अभी तक हमने वैल्यू AR की कुछ भी नहीं डाली थी। अगर कोई भी वैल्यू नहीं डाली है तो मेरे AR कंटेन द गार्बेज वैल्यू,
Now, for the differentiating, I am writing the AR1. I am giving, as you know, definition locations are different. ये locations जो हैं, ये locations different हैं. ये locations कहीं पे और पे हैं. These locations are at some another point. These locations are at some another point. These locations are not at this same position. Okay. Now I will write here end pointer PR1. ये डेफिनेशन की लोकेशंस जो है ये अलग लोकेशंस है, ये अलग लोकेशंस हैं. अब जब आपने कॉल पार्ट को जब ये कॉल किया, जो एल की वैल्यू इसमें पड़ी है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गई है? कहाँ पे ट्रांसफर हो गई है? इस सेल के अंदर. ये बी की वैल्यू कहाँ पे ट्रांसफर हो गई है? यहाँ पे. दिस वैल्यू ट्रांसफर. नाउ दिस करंटली इट कंटेन द गार्बेज वैल्यू. दिस गार्बेज वैल्यू आल्सो. नाउ लिसन नाउ. यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, कोई रेफरेंस ऑपरेटर नहीं लगाया, तो इसकी मेमोरी लोकेशंस क्या है? डिफरेंट है. इफ आई राइट द, यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिखने किया हुआ है ना. इफ आई राइट हियर द रेफरेंस कीवर्ड, इफ आई राइट हियर द रेफरेंस कीवर्ड, नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? सेम लोकेशन, नई लोकेशन नहीं बनेगी. AR1 will start referring to the same location of AR. AR1 also start referring to the same location AR. Okay. PR1, if I write the reference operator with this, again it will not make us another location. It will start referring to the same location. अगर सेम लोकेशन को रेफर किया है तो अगर इसमें अपडेट करें तो होगी, वो अपडेशन कहाँ पे होगी? Clear to everyone? Yes or no? Ma'am, I have a query that, ma'am, in question it's not, ma'am, in question it's not mentioned that we have to use only one function. So, in this, can we use different functions for it? Wait. I will explain it. Wait. Let's have one poll first. Then we move to the same question. I'm going to wait. Am I audible? Students, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. पोल तो हमारा उसका है, क्लासेस का है, तो नहीं होगा मेरे ख्याल से. फटाफट टॉपिक खत्म करें. यस बोलो, कौन बोल रहा था टॉपिक इसके बारे में? Ma'am, in question it's not mentioned that we have to use only one function. So we can use two function for it and it will return to Now listen carefully. The function representing that we have to return more than one value. More than one value means कि एक ही फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है. More than one value. वैसे तो जो फंक्शन होता है it will return only one value. But the function is you have to return more than one value. But ma'am, in question it's not that we have to use only one function. You can make two functions also, but you have to return more than one value.
दो फंक्शन भी बना लो आप, पर आपको फंक्शन के अंदर दो वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेंगी। अब इस प्रोग्राम में AR1 है, ठीक है, PR है, 1 है, दो वैल्यूज है। आप दो वैल्यूज को रिटर्न AR1 नहीं लिख सकते, रिटर्न PR1 नहीं लिख सकते। विद इन द सेम, इफ आई राइट हियर int, if I write int, I can't able to return write like this. Yes, ma'am. ठीक है, अगर आप दो फंक्शन से बना लेते हो, आई एग्री कि आप दो फंक्शन बना लो, क्या आप उस दो फंक्शंस में दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो? No, ma'am. नहीं कर सकते हो, तो करने के लिए कंसेप्ट आपको इस तरह का लगाना पड़ेगा। इजीएस्ट वे। Okay, ma'am. Okay, Yes, ma'am. is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Hurry up, I have to finish. Hurry up, reply with yes or no. Yes, ma'am. Yes, yes. Now let's, now जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आपको वीडियो में सेंड कर दूंगी। दैट इज वन लास्ट क्वेश्चन, आपको वीडियो सेंड कर देंगी। दैट इज, किया किसी ने टू डिस्प्ले द कैरेक्टर्स? आपको इसकी वीडियो बना के मैं सेंड कर दूंगी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मेन टॉपिक ऑफ द क्लासेस एंड दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। पेपर का एक क्वेश्चन रह गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो, यस और नो? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक प्रोग्राम क्वेश्चन है वो आपको वीडियो सेंड कर दूंगी, वहां से देख लेना कैसे किया मैंने। ओके, नाउ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स concept, very important concept, and this is the main topic of the object oriented programming. Till now we had just discussed about the C language. Till now we had discussed about the C languages concept which we can use in the C++ also. Now let's start with our first topic of the object oriented programming, that is the classes and the objects. Classes and the objects. Now, what is class and what is an object? Tell me, anyone, what is a class and what is an object? Yes, students, anyone, any student here? क्या होती है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट? Ma'am, object is a member of class. बोलो बोलो। Class is a set of a Object is a member of a class. That's a class, member of class. Okay, first one thing that why we use this concept? Why we use this concept? Yes, tell me. Why we use the concept of the object oriented programming? Why we use the concept of the classes and objects? Yes. Ma'am, use of multiple data type. That can be done also with structures. Different data type can be used with the help of structures also. One more To thing. use inheritance. grouping of data, like Yes, so that we can use the various concept of object oriented programming like the inheritance, encapsulation, data abstraction. Polymorphism. Like these concepts can be only done with the help of the classes and objects. These concepts are not present in the C language up to the structures also. Class and object is like the similar to the basic of the class and object जो है ना वो कहाँ से लिया, structure से लिया। That concept is taken from the structure itself. I will write the, आप सबको structure का code आता है, right? Tell me the structure, syntax of structure. You write the struct keyword, yes, and then write the structure name. Okay, and A and B, you write like this. Class can also be write, बस little difference है, याद रख लो. Write the keyword class. Write the keyword class. This is syntax. Here we write the struct keyword. Here we write the class keyword, and then write the class name, which obey the rules of identifier.
which obey the rules of identifier, and curly brackets and write the semicolon. And this semicolon represent that the class is just a specification. A class is just a specification. Specification means it doesn't occupy any memory. This class, this structure, this class and this structure till now doesn't occupy any memory. If I write like this, int A, int B also, it will not occupy any memory. This is just a specification. Class is a user-defined data type. Structure is also a user-defined data type. Okay, structure and class both are the user-defined data type, which can able to occupy different types of data. Now, this is just a specification. इसमें डाटा स्टोर नहीं होगा. ये आपको सिर्फ एक आर्किटेक्चर व्यू देंगे कि हमारी क्लास जो है ऐसी होगी. ठीक है. और ये जो ऐसे लिखा है मैंने, this is called the empty class. This is called the empty class. This is called the empty class. Okay. And remember the one thing, empty class also occupy 1 byte of memory. ये placements में question पूछ लेते होते हैं कि in one empty class, how much memory is occupied by the empty class? By default, empty class occupy 1 byte of memory. Whether it is occupying some memory, अगर आपने यहाँ A और B नहीं लिखा, फिर भी इसको 1 बाइट की मेमोरी ऑक्युपाई होगी. ठीक है. क्लियर? टिल नाउ इट इज क्लियर. Now, I think now it is visible. Yes? Yes, ma'am. Yeah. Okay, now this class and this. ये समझ लग गया सबको क्लास कैसे बनाते हैं. क्लास कीवर्ड लगाते हैं, क्लास का नाम लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, कर्ली खत्म की और सेमीकोलन लगा दिया. ये मेरी क्लास हो गई. इस क्लास को क्या कहते हैं? एम्प्टी क्लास. और एम्प्टी क्लास क्या कंटेन करती है? 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑलवेज. नाउ सेकंड स्टेप. मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है. स्क्रीन विजिबल नहीं है. व्हाई नॉट? I think it is visible. Yes, Supriya, is it visible? Supriya. मैम ज्योतिष्ना. No, ma'am. Why not Supriya? मैम पहले पिन करने पर विजिबल हो रही थी पर अभी नहीं हो रही है विजिबल काफी देर से. Yes. No. Look. I think now it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now listen. Now second step. This is the way to write the structure. Now structure contains the one thing called the access specifiers. Structure contain, oh sorry, class contains. Structure के साथ में difference आपको बताती हूँ क्या है. पहले class बता दूँ कैसे बनती है. अब हमारे पास क्लासेस में क्या होता है? असेस स्पेसिफायर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं असेस स्पेसिफायर्स? वन इज प्राइवेट, सेकंड इज पब्लिक एंड थर्ड इज प्रोटेक्टेड. C language contain the one word that is access specifiers. Access specifiers are the private. Access specifiers can be public. Access specifier can be protect. अब access specifier क्या होता है? अब access specifier कीवर्ड क्या है? Access specifier is basically किस तरह आप डाटा को असेस करना है. Means
यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्राइवेट लिख सकते हैं. कैसे? राइट द प्राइवेट and then the column. Private is a keyword and which is called the access specified. We can write the public also like this, public लिख के keyword and column. We can also write the protected and then column, but within the class only. Within the class only you can write the private colon, public colon, protected colon. Okay, in this way you can write like this. Now अब स्पेसिफाइज होते क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम के हेल्प से बताऊंगी. फर्स्ट थिंग, क्लास बना ली, क्लास के अंदर आप लिखते हो असेस स्पेसिफायर. असेस स्पेसिफायर कैन बी प्राइवेट, असेस स्पेसिफायर कैन बी पब्लिक. That is the keyword. You have to write in the same manner. Now, this access specifier can contain two things. Can contain data members. Can contain data members and member functions. Can contain data members and or member functions. Every public or protected can contain data members and member functions. Now, data member access specifier, ये प्राइवेट और पब्लिक ना, जो वो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के बताऊंगी कैसे ये चलते हैं, इसके वर्किंग क्या है. ठीक है, मैं डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं. डाटा मेंबर मींस इफ आई राइट इंट ए, हम इंट ए लिखते हैं ना, अगर इसको इंट ए को क्लास के प्रोग्राम के अंदर लिखा है, इफ आई राइट इट इन द क्लास प्रोग्राम, देन इट इज कॉल्ड द डाटा मेंबर. If I write int a within my class program, then it is called a data member. Okay, one thing. And what is member function? Member function is basically whenever I write any function, if I write void f1 function with definition, if I write any function definition within the class, that is called the member function. That is called the member function. Member function can be write the definition also, or we can write the void f1 declaration also. Member function मतलब function की बात कर रही है, डाटा मेंबर के मतलब वेरिएबल की बात कर रही है, पर मेंबर लिखने का मतलब है कि वो क्लास का पार्ट. मेंबर लिखने का मतलब क्या है, वो क्लास का पार्ट. क्लियर? That can be you write in private also, that you can write into the public also. Now, tell me till now any question or any doubt. Yes, students, till now any doubt or any question? Is it clear how we can make a class? Syntax is clear to everyone? Each term should be clear to everyone. ये प्राइवेट और पब्लिक कैसे चलेंगे, क्यों लिखे, मैं आपको अभी बताऊंगी. सिंटेक्स का तो सबको समझ लग गया. डाटा मेंबर पता लग गया क्या होते हैं, जो हम इंट ए लिखते हैं वेरिएबल्स. अगर वेरिएबल्स को क्लास के अंदर लिखा तो डाटा मेंबर बन जाए. मेंबर फंक्शंस कौन से होते हैं? द फंक्शन व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड द मेंबर फंक्शन. द वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड द डाटा मेंबर. ओके, दिस इज द वन थिंग. And this is called a class. Class is just a blueprint, just a specification. Now this is the first step while creating of the class. Second step. First step, you have to create a class. Second step, you have to create an object. How we can create an object? पहले सबसे पहले आपको क्लास बनानी है और क्लास सबसे पहले ऊपर प्रोग्राम में बनानी है, और उसका सेकंड स्टेप क्या होता है, वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? Syntax, the way to create an object, class name and obj. Class name and the obj. Class name and obj. This is the way to create an object. अब क्या हुआ है, ये तो हमने बस एक आर्किटेक्ट डिजाइन बना दिया है. We have just designed आर्किटेक्ट बना दिया कि हाँ कि इस तरह का बनेगा, इस तरह का मेरा ये मैप होगा. पर वो मैप करंटली वर्क कैसे करेगा, कब करेगा? When we allocate the memory, this will allocate the memory. This part will allocate the memory to these data member and the member functions. When I write this line, this is the way to create an object.
Third step, to assess an object, to assess the data of class, to assess the data of the class, to assess the data of the class. Okay. Third step is to assess the data of the class. How we can assess? जब भी assess की बात आती है ना, just remember something. You have to use the dot of it. You have to use the dot of it. ठीक. और जिसको बुलाना है, जिसको assess करना है, उसका नाम बाद में रखना है. Ma'am, you are not audible. जिसको assess करना है. Now it is okay. Now it's okay. Yes, ma'am. जिसको assess करना है आपने, उसका नाम यहाँ पे लिखना है. जैसे अगर मैं data member को assess करना है, I will write data member here. If I want to assess member function, I will write here dot member function. और member dot से पहले क्या आएगा? जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, that will come here. Okay, these are 3 steps which are used while making the program of the classes and object. Creation of the class, creation of the object, and how we can assess the data of the class. Okay, syntax is clear to everyone? Yes or no? Syntax is clear? Yes. Reply with yes or no. Yes, ma'am. Yes. Now I'm going to make one program, and with the help of program, I will explain the whole concept. Class. Now again, I make class. Class is a keyword. Now suppose अभी हमने rectangle का program किया था ना, area of rectangle. Now I am going to make the area int. Now I will write here the private first colon. Now area contains the 2 variables. One is L and second is this, because AR is equal to L into B. I want also this AR. Okay. ये मैंने private में लिख दिया. Now I am going to make the one public. Here I will write the function. ये क्या है? What is this? What is this? Class के अंदर इसको क्या कहते हैं? What we call it in the class? Data member. We call it data member. ठीक है? Now in public I am going to make one function. Function means जो हमने area calculate करना. I will write here cout enter L into B. Okay, C in L V. Okay, now I will write AR equal to L into B. Visible to everyone? Yes, ma'am. And clear? ये कंटेंट तो क्लियर होगा. मैंने पूछा, पहले इनपुट किया स्क्रीन के ऊपर, enter L and B, then afterwards taken the input from the user, then calculate that and then display the value. Yes. Now this is the part, and ये curly bracket खत्म की है तो मैंने ये curly bracket यहाँ पे close कर दी. And remember you have to write the semicolon here, and you have to remember write the semicolon here. This is the data member and this is the member function. Now ये तो मेरी क्लास बनी है. अब मेरा प्रोग्राम तो हमेशा void main से शुरू होता है. Program we have to write the void main. I am going to write the void main. Now void main. What is the requirements? What is the second step of classes and objects? What is it? I had created a class. What is the second subject? Object. Second step. Creating an object. Creating an object. How I can create an object? How can I create an object? First Class. name of the class. name. Name class. What is name of the class? Area. And write any object name. Anything you can write which obey the rules of identifier. Now, in this way, I have created the object. Now, जब मैंने ये object बनाया है तो क्या हुआ है? obj1
memory will be allocated and which will contain L, AR, B and one function AR. Now change the name, AR1 लिख देती हूँ यहाँ पे, AR1, ठीक है. This is for the function, this is the length and width. Okay, ये allocation मिल जाएगी इस ब्लॉक को. ये मैंने डिजाइन किया था आर्किटेक्ट और उसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया है, इससे लिखने के बाद. नाउ अब क्या करें. नाउ थर्ड स्टेप क्या है. व्हाट इज द थर्ड सब्जेक्ट स्टेप. व्हाट इज द थर्ड स्टेप. यस, we will have to assess the data. ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब ऑब्जेक्ट में डाटा डालना भी है, वहां से फैच भी करना है, तो कैसे करूं. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ ओबीजे. सबसे पहले असेस करना है, मुझे यहाँ से डाटा यूज भी करना है और इंसर्ट भी करना है, तो मैं क्या लगाऊंगी, डॉट. किसको असेस करना है, इसको असेस करना है. अगर तो आई विल राइट दिस. इफ आई वांट टू असेस दिस आई विल राइट दिस. If I want to assess this, I will write dot B. It's depend upon you, which you want to assess. Okay, now I want to assess this now first. This is a function, so I will write here the function. अब assess किसको करना है, ये वाले AR1 को. इस AR1 को assess करने से पहले I have to move to this. यहाँ पे जाना पड़ेगा. ये क्लास के नंबर पे जाऊंगी तभी इसको क्लास जाऊंगी ना, तो क्या लिखूंगी पहले, इसका नाम. I will write here. First move to this part and then move to the clear. Clear. Now what will happen. Now let's see what will happen. As you know, always program execution start from the main. Okay. Always program execution start from the main. Object is created, class पहले से बनी है. जब उसने ये लाइन देखी obj.assess, then it will transfer the control to this line. Then it will transfer the control to this line and then cout enter the L and B. आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आ जाएगा, enter L and B. Scene L and B. User will input and this 20 and 30 will be stored into these locations. Okay, now then afterwards A R equal to L and B means calculate the both and store into the AR. Calculate the both and means 600, that will be stored into AR and display that. Answer आ गया आपका, yes or no. यहाँ तक प्रोग्राम क्लियर है सबको. Any doubt regarding till now? No, Till ma'am. now, any doubt? No. Now listen. मैम प्राइवेट मेंबर है तो एक्सेस कैसे करेगा. हाँ, yes, repeat again. मैम एआर तो प्राइवेट मेंबर एक्सेस कैसे करेगा. वो मैं बताने लगी बेटा, रुको. डेटा मेंबर तो प्राइवेट है. मैं बताने लगी, अब मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ. लिखो बेटा, listen. Now, अब मैंने I am going to explain you the concept of the public and the private. If anything is written within the public part, then anybody can access that. जैसे नेट पे कुछ डाटा पड़ा है, कोई भी access कर सकता है. That is a publicly available. Okay, anybody can access that data. Means if I write obj.ar वेबसाइट के इस कंटेंट के ऊपर गई मैं असेस कर पाई बिकॉज वो पब्लिक था. ओके, बट इफ आई राइट obj.l, if I write obj.l, here the compiler will generate error. Because there is a concept of data hiding. Data is hidden. Data cannot be accessed outside the class. ये L जो है ना, इस curly brackets लेके इस curly bracket तक कहीं भी यूज कर लो.
कहीं मतलब फंक्शंस में यूज कर लो, जितने मर्जी फंक्शन बना लो। और लिसन, क्लासेस में सिर्फ 2 जगह ही लिख सकते हो, पब्लिक जहाँ प्राइवेट के अंदर, और क्या बना सकते हो, जहाँ तो डाटा मेंबर बना सकते हो, जहाँ मेंबर फंक्शन बना सकते हो। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, सी आउट ए सी आउट बी, ये नहीं लिख सकते हो आप लाइन। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, ये लाइन ऐसे नहीं लिखोगे आप। क्या लिख सकते हो बस, डाटा मेंबर और द मेंबर फंक्शन। ये लाइन आप मेंबर फंक्शन के अंदर लिख दो, दैट इज पॉसिबल। ओके, नाउ अब क्या बात है कि obj.l है, एल जो है वो प्राइवेट है। प्राइवेट मीन्स कि एल जो है वो सिर्फ इस प्रोग्राम क्लास के अंदर ही हम लिख सकते हैं। इफ आई ट्राई टू राइट आउटसाइड इट, इट विल जनरेट एन एरर, इट विल जनरेट एन एरर। सपोज आई वांट टू यूज दिस, आई वांट टू यूज दिस आउटसाइड, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगी इंट एल। I will declare here int I. Okay. Now, if I write this line, now it will be accurately or efficiently work, properly work. Clear to everyone? Ma'am, Yes. pardon. Yes. Clear? Listen. Now, next. अगर मैं ये भी ना लिखूं, प्राइवेट वर्ड भी ना लिखूं, पब्लिक वर्ड भी ना लिखूं, तो क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा? Yes. If I will not use the assess specifier. Assess मतलब, and if I want to assess anything, we have to use assess specifier. If I will not use any private or public, क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा? Yes or no? मैम बाय डिफॉल्ट तो प्राइवेट ही होगा। By default, if अगर मैं कुछ भी नहीं लिखती, कोई भी assess specifier नहीं लिखती, तो by default the compiler will take all the data is a private. By default compiler क्या लिखेगा? It will write private word and will take whole data as a private. ओके, एरर नहीं आएगी, पर वो सारे डाटा को क्या लिख देगा, प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इस डाटा को असेस करना है, आप असेस कर सकते हैं? कैन यू एबल टू असेस दिस डाटा? No. नो। नाउ हाउ कैन आई असेस दिस डाटा? नाउ टेल मी, हाउ कैन आई असेस दिस डाटा? आई हैड मेड होल डाटा एज अ प्राइवेट, व्हाट शुड आई डू? पब्लिक बनाना पड़ता है। होल डाटा And by making it public. by making public, but I want this function also from private. Then Calling the function in public. पब्लिक में इसको असेस कर सकते हैं। ये पब्लिक में असेस कर सकते हैं लोअर वी ईयर को। पब्लिक में क्या करते थे? पब्लिक में असेस कर सकते हैं लोअर वी को, और पब्लिक का जो डाटा वो से असेस कर सकते हैं वाइड मेन में। तो मीन्स कहने का कि अगर क्लासेस बना रहे हो और उसका डाटा असेस करना है, तो आपके प्रोग्राम में कुछ ना कुछ पब्लिक होना ही चाहिए। okay? अगर सारा डाटा प्राइवेट हो, हाँ, अब मैं अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, कैन यू रिपीट? Yes, can you repeat? मैम प्राइवेट भी डेटा रहेगा तो मैम एक्सेस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर डाटा प्राइवेट हो गया तो डाटा एक्सेस नहीं हो सकता। अब अगर मैं लिखती हूँ obj.ar1, तो वो क्या होगा, एक्सेस नहीं होगा, ये एक्सेस नहीं होगा। तो मीन्स कहने का कि अगर आपने प्रोग्राम बनाया सी के थ्रू, C++ के थ्रू, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो you have to make one public so that you can able to access the data. Means I have to make one public, यहाँ पब्लिक लिखा मैंने, और पब्लिक के अंदर मैं लिख देती हूँ void d1 डिस्प्ले के लिए, एंड डिस्प्ले के अंदर ये कहाँ पे आ रहा है, क्लास के अंदर लिख रही हूँ, ये ब्लॉक क्लास के पब्लिक के अंदर void d1
and I will write the AR1 column and their class close. Now, if I write obj.ar1, this will generate error. This will generate error. But if I write d1 dot this, जैसे हैकिंग की बात कर रहे थे ना उस दिन, हैकिंग करनी जैसे मर्जी करें, डाटा तो मैंने चुराना है, डाटा तो लेना ही लेना है, कैसे लूं? मैं कोई और बंदा ढूंढ लेती हूँ काम करने के लिए, उसको पकड़ के फिर कॉल कर लिया, डाल लिया मैंने। ठीक है, क्या किया, एक बंदा पकड़ा, एक फंक्शन और बनाया और उस फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन सारी इंफॉर्मेशन ले ली। ये फंक्शन के पास सारी इंफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल यहाँ पे, then it will take whole information and discuss that information. Clear to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt regarding this concept, classes and object? This is very important topic and this is base topic of your classes and objects. You should be clear with each and every step. Yes. If any student have any problem or any doubt regarding anything, just ask me without any hesitation. Yes. पब्लिक प्राइवेट पता लग गया? क्लियर हो गया सबको क्या होता है? Yes, ma'am. स्पेसिफायर्स हैं, कैसे यूज करते हैं, वो क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. यस, क्लियर, वेरी गुड। ओके, मैम प्राइवेट को प्रोटेक्टेड में चेंज करके भी तो एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते हो। आप मुझे अभी आप प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हो, आपने प्रोटेक्टेड की बात की, इसका मतलब आपने सी पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी पहले। क्या डिफरेंस है? अगर मैंने अभी बोला था यस कि एक प्रोटेक्टेड की स्पेसिफायर भी होता है, तो फिर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट जो है वो हम डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड से हम प्राइवेट मेंबर्स भी असेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर दूंगी तो काम तो प्राइवेट जैसा ही करेगा। ये प्रोटेक्टेड असेसेबल नहीं होता। नहीं, अगर आप प्रोटेक्टेड लिख देते हो और ओबीजे आप एल लिख के देखना, नहीं चलेगा। इट विल वर्क एज अ प्राइवेट, it will work as a private in this case. Protected keyword is basically used in the concept of, आगे जाके हम जो concept पढ़ेंगे inheritance, उसमें आपको difference पता लगेगा कि protected और private में difference क्या है। Till now अगर मैं यहाँ पे protected लगा दूं चाहे private लगा दूं, वो इसी तरह ही error और execute करेंगे। The main difference that you will understand with the help of the inheritance only. Okay? इसलिए मैंने अभी वो कंसेप्ट नहीं बताया प्रोटेक्टेड का। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, रिप्लाई विद Yes, यस और ma'am. नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, गुड गुड गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द, नाउ अब पोल के लिए हमारे पास क्वेश्चंस हो गए हैं, अब पोल कर लें। लेट्स हैव, आई एम गोइंग टू लॉन्च द पोल नाउ। Yes, reply. I will give you the 1 minute.
Okay, I'm going to end the poll. What is the answer of first question? What is the answer of first question? Class A. First question, class. Option A. Option A. Yes. Option A. Because option A contain the semicolon at the last also. Okay, that's why. Second, what is the answer of second question? 1 byte. One by. One. One Okay. byte. 1 byte. Option B. Okay, good. Now I am going to launch second question. No, let's do next part also. Then afterward I'm going to launch the next question. Now next topic, next thing. Next is how we can define member function outside the class. How we can define member functions outside the class. Syntax. Anyone tell me the syntax? What should I write? If anybody have knowledge. क्या लिखूं? Class name. Class. Then अभी लिखना. Scope resolution. Resolution. और public. Public. पब्लिक डाटा को एक्सेस करेंगे तो पब्लिक. और क्लास नेम. क्लास नेम. I want to return type class name, scope resolutor, function name. Yes. Return type, class name, scope resolution operator, and the function name. This is the syntax. Whenever I want to define member function outside the class, I have to use this syntax: return type, class name, function name, and the content. अब ये है क्या member function क्या था हमारा? ये define outside the class क्या चीज है? जो मैंने अपना पिछला प्रोग्राम I have made the program of class, उस क्लास के अंदर फंक्शन क्या बनाया था? क्या फंक्शन का नाम था? What is the name of the function? Yes, tell me. AR. AR1. AR1 is the function name. AR1. This is the function. And this function contains the set of statements in your program. In your previous program, this function contains the set of statements. Agree with me or not? Yes, ma'am. Yes. Remember one thing. One also thing. The function which is defined within the class, that functions are by default are inline. These functions by default are inline. Okay. अगर आप inline कीवर्ड नहीं भी लगा रहे तो ये functions by default क्या है? Inline. Okay. Suppose in the program आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का प्रोग्राम बनाया और डेफिनेशन लिखी. अब ट्राई करना और इसके अंदर फॉर लूप लगाना. क्लास के प्रोग्राम के अंदर ही फॉर लूप लगाना तो इट विल स्टार्ट जनरेटिंग एन वार्निंग. इट विल स्टार्ट जनरेटिंग एन वार्निंग. क्यों वार्निंग देगा? वो कहेगा कि ये इनलाइन फंक्शन है और इनलाइन फंक्शन जो है वो स्मॉल लाइंस ऑफ कोड के लिए होता है. आपको पता है. ठीक है. तो आप क्या है लूप लगा रहे हो. दिस इज नॉट फिजिबल. तो स्टार्ट गिविंग द वार्निंग. ओके. वार्निंग एंड स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर टू एवरीवन? The functions which are defined within the class are by default are inline. ये फंक्शन जो क्लास के अंदर है वो अगर कीवर्ड इनलाइन नहीं लगाया फिर भी वो क्या है? इनलाइन. इनलाइन सबको पता है ना? What is inline function? What are the inline functions? Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Reply. Okay. Now अब ये फंक्शन है. इसकी डेफिनेशन मैंने इसके अंदर लिखी है. बट
आई वांट माय क्लास का साइज जो रिड्यूस्ड है। अब सपोज एक फंक्शन बनाया है, मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, तो प्रेफरली जो फंक्शंस की डेफिनेशन है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? आउटसाइड द क्लास। वी राइट द डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। कैसे लिखते हैं? हियर वी जस्ट डिक्लेयर द फंक्शन। हाउ वी डिक्लेयर? रिटर्न टाइप function name semicolon. This is a way to return the function. Okay, the function declaration is done within the class and function definition is done here. Function definition में क्या लिखेंगे? What is the return type? Void. I will write void. What is the class name? Class name लिया था हमने AR. Scope resolution operator means scope के बाहर यूज करने के लिए. This is the operator. This is called the scope resolution operator. Now function name क्या है? AR1, then brackets, then afterwards set of statements जो आपने यहाँ पे लिखी थी. इससे क्या हुआ? मेरा जो क्लास का ब्लॉक है उसका साइज क्या हो गया? Reduced. In this way I can able to define the member functions, to define the definition of the function outside the class with the help of scope resolution operator. This is called the scope resolution operator. 4 dots. This is called scope resolution operator. Clear to everyone? प्राइवेट डाटा का मेंबर फंक्शन उसे भी असेस कर सकते हैं? नहीं, ये असेस करने के लिए नहीं है. This is not for assessing the data. This is only to define the data. हम डिफाइन कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. डेफिनेशन है. असेस कैसे? असेस का स्क्वायर क्या है कि डाटा असेस कैसे कौन करेगा? अब मैं नोट्स दे रही हूँ. नोट्स मैं कहती हूँ कि ये क्लास के नोट्स इसके आपके पास ही रहने चाहिए, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या हो गया? प्राइवेट. ठीक है, वो प्राइवेट हो गए, वो असेस है. ये सिर्फ डिफाइन ही करके बता रही हूँ कि ये काम होगा. कुछ भी कहीं भी लिख सकते हो. क्लियर? यस. सपोज फंक्शन नेम जो है उसको प्राइवेट कर दे पहले ही, तो फिर तो ये एक्सेस ही नहीं करेगा. हमने असेस किया काम बच्चे, हमने असेस तो किया नहीं ही. मैम, स्कोप रेजोल्यूशन लगा के जो फंक्शन नेम लिखा मैंने उसको हाँ. क्लास में पहले ही प्राइवेट कर दे. ये देखो मेरी प्राइवेट ही है, मैंने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब प्राइवेट है. फिर भी काम करेगा ये. देख बेटा, मैंने क्या किया है, सिर्फ इतना किया है कि ये फंक्शन था ना, जो इसका डेफिनेशन थी वो क्लास के अंदर लिखी थी. क्लास मेरी अब एक, जब मैं प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, जब कुछ भी करूंगी, तो मेरे एक फंक्शन थोड़ी होगा, मेरे तो 10 फंक्शंस होंगे. अगर मेरे 10 फंक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 फंक्शंस बना दिए मैंने. अब उनकी डेफिनेशन लूंगी तो कितनी बड़ी होगी, तो मेरे तो क्लास का पता ही चलेगा कहाँ पे शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई. Whenever you make the project, your class and your void main should be small. It should contain the less number of lines. Remember this thing. Whenever you make any project, always the class and the main should be contain the less number of lines. सब कुछ बाहर होना चाहिए using the concept of functions. अब देखो बेटा, इसमें प्राइवेट लिखा है. प्राइवेट मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो उसकी डेफिनेशन थी ना, डेफिनेशन को बाहर लिख दिया है. ठीक है, पर असेस जो है वो तो ऑब्जेक्ट के थ्रू होनी है. यहाँ पे असेस थोड़ी हो रही है. असेस कब होगी? असेस तो तब होगी ना जब मैं लिखूंगी यहाँ पे. देख बेटा, ये मैंने लिख दिया. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ void AR1. यहाँ पे लिखूंगी क्लास नेम AR कॉलन स्कोप ऑपरेटर. यहाँ पे क्या आएगा? AR1 और यहाँ पे डेफिनेशन. ठीक है. अब ऑलवेज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन. Here I am going to make the object and object dot AR1. AR1. Now here you have written a private, so it will not able to access this data. Okay, ये कहाँ पे जाएगा? इसके पास. ये कहेगा डिक्लेरेशन की है, इसकी डेफिनेशन मैंने बाहर दी हुई है. ये डेफिनेशन देख चेक करेगा, ढूंढेगा, अगर मिल गई तो वो कंटेंट कर देगा, पर तभी करेगा अगर ये पब्लिक होगा. क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास का साइज रिड्यूस करने के लिए जो डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं उसे बाहर लिख दिया है, पर असेस तो इसके थ्रू ही होगी.
चाहे कहीं पे लिखा हो, ठीक है। ये वे ऑफ राइटिंग द डेफिनेशन पार्ट इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास, but assess is only through the object and through the assess specifier. Clear to everyone? Any doubt? Any more doubt? Yes, students? Any more doubt? No, ma'am. Clear? समझ लग गया कि क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं? Now I'm going to launch another poll. I will give you the 1 minute. दस मिनट लेट स्टार्ट हुई थी क्लास हमारी, 10 मिनट और लेट हुई थी। आज मैं आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के प्रोग्राम भी सेंड करूंगी, वो भी आपने करने हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम ट्यूट डिस्कशन भी कर लेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू एंड द पोल। व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? Which is used to define the member of the class externally? कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? Scope resolution. Scope resolution operator. Okay. Which other keyword also used to declare the class other than classes? कौन सा? Struct. एक यूनियन भी है, यूनियन पढ़ा होगा आपने सी में। both Answer is union and struct. Both. I just want to know whether you know the structure or no. क्या struct में struct ABC इन A, B लिखती हूँ, मैं कह रही हूँ स्ट्रक्चर जो क्लासेस की तरह वर्क कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर पब्लिक वर्ड लिख सकती हूँ? Can I write the here? मैम बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो अगर मैं लिखूंगी तो कुछ एरर नहीं आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख दूँ तो फिर भी नहीं आएगा एरर। चलेगा प्रोग्राम? यस मैम। यस, जिस तरह हम क्लासेस का मैंने सब्जेक्ट टॉपिक समझाया ना आपको, स्ट्रक्चर भी उसी तरह यूज करते हैं। पूरा का पूरा कंसेप्ट असेस फायर्स इसमें पब्लिक और प्राइवेट आप उसी तरह यूज कर सकते हो, सेम एज दैट ऑफ द क्लासेस ऑब्जेक्ट, बस इसमें प्रोटेक्टेड कंसेप्ट नहीं आएगा। not be using structures, that is the difference, that's why we come to the classes and objects concept. Clear? ये देखो स्ट्रक्चर में सब कुछ हो रहा है, फिर मुझे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इसमें हमारे पास इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इस तरह के कंसेप्ट्स, प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स, वो कैसे यूज करेंगे? वो थ्रू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। बाकी प्राइवेट यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये भी डाटा मेंबर ही होता है। ये डाटा मेंबर किसका है? स्ट्रक्चर का। फंक्शंस भी बना सकते हो सेम एज दैट ऑफ द क्लासेस, जो मैंने अभी बताया आपको। यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, हियर आल्सो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। You can add the definition here. That is also possible. Okay. ये ऐसे प्रोग्राम को आपने अपने लास्ट सी में yes reply yes no. Have you performed the program like this in which you can had make the data members and member functions within the structure also? Yes or no?
मैम स्ट्रक्चर में मेंबर फंक्शन होता है? नो मैम। बना सकते हैं। यस यस वी कैन एबल, we can write like this. We can make a member function. We can able to make the member function. Okay. कोई डिफरेंस नहीं है. You can make the class also. You can make the structure also same. जो मैंने आपको क्लास में बताया ना जितना भी अभी तक, तो structure में वैसे का वैसे चल सकता है. चला के देख लेना. Okay. Same rule. Clear? Yes or no? Yes ma'am. Prince Kumar. Prince Kumar 223 roll number. Yes, ma'am. जहाँ तो मेरे से डिस्कशन कर लो, जहाँ अपने आपको म्यूट कर लो. Clear? Now, last, then I will end the class. Okay. Array of objects. Array of objects कैसे create करेंगे? Array of objects. How we can create the array of objects? Yes, tell me. How we can make the array of objects? बोलो बच्चे. Easy. How we can make array of objects? Objects का array बनाना है तो कैसे बनाऊंगी? Tell me the syntax. Yes, EC student. Any EC student, tell me the syntax of creating an object. What is the syntax of creating any object? EC student. Any EC student, unmute itself and give me the answer. How we can create an object? Yes. Any EC student, unmute yourself and tell me how we can create an object. क्या मैं अज्यूम करूं आपको नहीं समझ लगा? Yes, tell me. इससे मैं क्या अज्यूम करूं कि आपको समझ नहीं लगा? Or you not Harkirat? Ma'am, class name, array name and size. Class name, array name and then size. array name. यहाँ पे array name लिखेंगे, यहाँ पे object name. Object name and size. Means class is like AR, obj1 and the size 20. We are creating the objects. One of L, B, AR and one is for function AR1. One location obj1 0. Similarly for the obj2, जो हमने स्ट्रक्चर में बनाए थे जो लोकेशंस, same can be done with the help of the classes, and in this case we are naming it as an object. This is called the array of objects. Class name, this is class name and the object and then array. Okay, in this way we can able to make the array of objects, array of n objects. We can write n objects. Clear to everyone regarding the classes and objects? Yes or no? Yes. Now you can ask me any question. Yes, students? Ask me if you have any doubt. कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सबको? यस, अगर एनर्जी है तो एक टॉपिक कर लें और रिप्लाई करें. टॉपिक एक और कर लें. Yes ma'am. No, ma'am.
करने दो। नो मैम, नो मैम। नो मैम। चलो अगर है तो मैं करवा सकती हूँ, मेरे में अभी है एनर्जी। आई कैन। हम सुबह का खाना नहीं खाया अभी तक। खाना नहीं खाया, चलो ठीक है। कोई डाउट तो नहीं अभी तक के आज के टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है? यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। बट मैं आपको इसके प्रोग्राम्स दूंगी, आज आपको मिल जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छी तरह कर लिए तो आपको नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किए तो देन यू कैन गेट द प्रॉब्लम। दीज आर द वेरी इजी टॉपिक्स। सिर्फ आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना और इम्प्लीमेंट करना, कहाँ पे क्या चीज लिखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है? सो टेक केयर ऑफ इट स्टूडेंट्स। ओके ओके देन। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक फीस नहीं डिपॉजिट की वो फीस डिपॉजिट करवा दो।